When I started my journey with Salman sir, my first film. My first love. सेम है सलमान खान सर के साथ तो मतलब बचपन से इमेजिन करा है कि कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ फिल्म करने का मौका मिलेगा और उनके साथ सोलो सीन करे. टाइगर इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. लाइक he's a beautiful soul is what I can say. The role should be interesting. If the role is interesting and is challenging, आपके रोल में एक कैरेक्टर ग्राफ हो जो जो एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जर्नी उसकी ट्रांसफॉर्म हो रही है उस कैरेक्टर की पूरी स्टोरी लाइन में, एंड इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल स्टोरी. दैट्स व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट. मेरे लिए वो ही बहुत मज़ेदार है, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो फीचर फिल्म हो, और चाहे वो टीवी शो हो, चाहे वो OTT हो. Hello everyone, you're watching us on Z Media. This is Gaurika and today I am joined by the most versatile actor Siddharth Sibal. Namaste, Sat Shri Akal, kaise hain aap and welcome to our show. Thank you so much, Gaurika, and excited to be here. And you're looking perfectly fit like always. You are our icon, our inspiration, source of motivation. क्या कहें. We'll come about the fitness part as well. But सबसे पहले I want to say that what's keeping you busy? What is happening? क्या चल रहा है आजकल? I think by God's grace, and I keep doing shukrana to Guruji that for the purpose that we are here in Mumbai, we are luckily getting work, and work is keeping us busy. So something what we enjoy, acting, that's every day we get an opportunity to go to a set and shoot a new character, and that's something which is making the journey worthwhile. Yeah. So enjoying that. So you have gotten a transformation as in like some students, they are really complaining to their parents that हम भी तो IIT की पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी तो हैं, इन्होंने अपनी जर्नी खुद क्रिएट करी है, उन्होंने कुछ अलग किया है, ठीक है IIT ठीक है, but you are the IIT that has converted into an actor, main lead. So हमें जानना है ये किस तरह से शिफ्ट कैसे आया, किसने खींचा आपको इस तरफ, So I think it's also something I believe in destiny. So it was all written. Of course, strategy is something I enjoyed. I worked in the IIT technical field. I'm a computer engineer. Wow. And then I did MBA as well. So I worked in the strategy space for a long time. Some big projects. I don't want to talk about that right now, but yes, it was something on national level with the current PM, and I enjoyed that part. But there was something which I felt a void, and there's something that was brewing. And when I met my partner, Priyanka, Yeah. and she is a chartered accountant as well, and very good at finance. So she is the one who started this discussion, and somehow she wanted to become an actress, and I was just supporting her. And as Guruji would have it, we both are here, and we both quit our corporate lives and started acting. Wow. And we both are enjoying our film journey now. That's crazy. I've heard people quitting acting and moving into the, and this is the vice versa thing. But again, talking about your journey, आपने मुझे लगता है कि कोई भी देश नहीं छोड़ा होगा अब्रॉड में, वहाँ पर पूरा फुटप्रिंट्स हैं. बट नाउ कमिंग बैक टू इंडिया, देन मुंबई, सपनों की नगरी. सो वी वांट टू नो कि ऐसे कौन सा शहर, ऐसा कौन सा देश है जो आपने एक्सप्लोर नहीं करा है, एंड अबाउट योर अब्रॉड सेटअप. वहां से यहाँ कैसे, यहाँ से वहां जाते हैं, सब कुछ उल्टा चल रहा है पर फिर भी सीधा चल रहा है, फिर भी सही चल रहा है. सो दैट्स द थिंग. So nice of you to say that. Actually, I love traveling. Yeah. तो मुझे मज़ा आता था, और पहला मेरा प्रोजेक्ट या जर्नी थी was इस्तांबुल, एंड सो आई हैव अ स्पेशल रिगार्ड फॉर दैट प्लेस, टर्की. मैं 1 साल रहा और बहुत अच्छी जर्नी थी मेरी वहाँ पर. उसके बाद एक बार शुरू हुआ तो फिर ऑस्ट्रेलिया, कहीं स्पेन, अलग अलग कंट्रीज में रहना शुरू करा. बस हाँ, फिर तो मतलब एक वो कहते हैं ना, हमने चख लिया एक बार वो इंटरनेशनल जर्नी, ट्रैवल करना, बैकपैक करना, अलग निकल जाना, देशों में घूमना. और सबसे ज़्यादा मेरा सफ़र अमेरिका में रहा है. अमेरिका में 10 से ऊपर शहरों में अलग अलग जगह रहा हूँ, अलग अलग तरह के काम करे हैं. अच्छा. मेरा फेवरेट न्यूयॉर्क होता था, लेकिन अभी आमची मुंबई. मुंबई. अब यहाँ से फिर जाने का कोई इरादा नहीं. अभी मौके भी लगते हैं. अभी वर्ल्ड कप की भी बात चल रही थी, बट my I wouldn't say my first love. My first love is Delhi because I'm a Delhiite, born and brought up in Delhi. दिल्ली वाले खुश. But abhi Mumbai is Karm Bhumi, and that's something that I'm loving this place. The vibe of the city is growing,
on me, and I think the city has so much to offer. Yes. तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, and I'm enjoying each and every moment living in Mumbai. And you're experimenting also. We have seen you on big screen, OTT, television, कुछ नहीं छोड़ रहे हो आप. And again, you know, with the new OTT shows and so many other things are coming. So we want to know that, you know, जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, पहले बड़े पर्दे पे लोग देखते थे सिनेमा, अब OTT बूम हो गया, अब तो वर्टिकल्स भी आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं. सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट? एंड इफ यू टॉक अबाउट टेलीविजन आल्सो, क्योंकि दिन रात शूटिंग चल रही है, रियल टाइम में सब चल रहा है, लेकिन OTT प्रोजेक्ट्स भी टाइम लेते हैं, अगर मूवी प्रोजेक्ट्स तो बहुत टाइम लेते हैं. वेटिंग पीरियड के मामले में वी नो देयर इज अ बिग डिफरेंस. So what according to you is the best and, you know, which you enjoy the most? In fact, it's a good question, but I would not like to classify as something good or bad. What I would say is script interesting होनी चाहिए. The role should be interesting. If the role is interesting and is challenging, आपके रोल में एक कैरेक्टर ग्राफ हो जो एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जर्नी उसकी ट्रांसफॉर्म हो रही है उस कैरेक्टर की पूरी स्टोरी लाइन में, एंड इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल स्टोरी. दैट्स व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट. और मेरे लिए वो ही बहुत मज़ेदार है, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो फीचर फिल्म हो, और चाहे वो टीवी शो हो, चाहे वो OTT हो. Like I've been, as you said rightly, I am open to everything. So मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो फीचर फिल्म हो, ना बिग बैनर, यशराज, Nadiadwala films, which I worked with. Sanjay some grand role. Yes, that also something I cannot talk about. Yes. Oh yeah, so many exclusives, but of course. So, but the point is that the role should be exciting, and the overall hero of the film is the script. Yeah. So I believe very strongly in that. तो और उसको जो ऑर्केस्ट्रेट करता है वो है डायरेक्टर. सो वी हम अपने आप को सौंप देते हैं डायरेक्टर और स्क्रिप्ट के सामने, एंड हाउ दे टेक अस थ्रू द जर्नी इज समथिंग, इज हाउ दे सी, दे आर द विजनरीज, and we try to match up to their expectations. That's how I classify. And उसमें मेरे को कोई प्लेटफॉर्म से वो नहीं है. जो मैंने हर रोल एंजॉय करा है जो अभी तक किया है, and I am also signing new projects which are very exciting coming up. और इतना बडिंग टैलेंट है, इतना अपकमिंग टैलेंट है इंडिया में, तो मज़ा आ रहा है. रोज़ कई बार इतने यंगस्टर्स आते हैं और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आते हैं, इतने नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं जो कभी सोच भी नहीं, हमने ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे कंसेप्ट भी आएंगे. और बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं फॉर द फ्यूचर ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया. Super. Now, if we talk about your roles, so we love seeing you in Vardiyan, or like the positive roles, green flag, कि वाओ हमारे लिए हाजिर हैं, देश की सेवा में हाजिर हैं. But now we got to know the things are changing. 360 degree. अब आप बहुत नेगेटिव, एंटागनिस्ट, विलेन, मतलब ऐसे खूंखार रोल्स में हमें देखोगे. वी आर एक्चुअली नॉट रेडी फॉर दैट, बट वी आर रियली एक्साइटेड टू सी दैट व्हाट यू हैव टू ऑफर. क्योंकि देखिए पॉजिटिव से अब ग्रे शेड, नेगेटिव शेड, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो आर यू आल्सो एंजॉयिंग द ट्रांजिशन, एंड वी वांट टू नो अबाउट द वर्दी डेज, जब आपने वर्दी पहनी, द पॉजिटिव लाइट. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? So I think this is very exciting for me as well, because when I started my journey with Salman sir, my first film, my first love. same here. सलमान खान सर के साथ तो मतलब बचपन से इमेजिन करा है कि कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ फिल्म करने का मौका मिलेगा, और उनके साथ सोलो सीन करे, और दैट वाज इन कॉप यूनिफॉर्म, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एंड सिकंदर, एंड देन War 2 also, we played a special forces officer. So those were interesting journeys, and that kind of established me in a lot of spaces and projects as an officer. And even currently I'm doing some roles. I cannot specify much in detail, but some of the very, very strong officer roles in big films I'm still doing. But somehow I feel the definition of antagonist has changed in India. Yes. Now it's no longer वो गब्बर सिंह और वो शाकाल वाले villains नहीं है. Now like Durandar, Hamza Ali. Yeah, it's become much more subtle now. What I would call it, it's more subtle, and it's more sometimes even the people who are in the corporate world, and how they have a negative, evil side to them, and how that is displayed. That's terrible. That's even worse. I'm aware about those people. I know that. So that's one, and also in the business field as well. So how are you able to play a negative character without going overboard, without going OTT, as we call it, over the top, yes. Right? And that's something very interesting, and that's what is changing. And I have been lucky that I've been getting those opportunities in the antagonist space.
And yeah, you were right. Actually, last 1 year, those are the roles that have been flooding now, Yeah. and मजा आ रहा है. मतलब पर ये अच्छी really चीज enjoying. है दैट आपको टाइपकास्ट नहीं किया गया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि ये एक्टर है, ये पॉजिटिव करता है तो उसको पॉजिटिव पॉजिटिव रखो. तो सम डायरेक्टर्स दे डोंट रियली एक्सपेरिमेंट कि चलो इस पे लोगों को पसंद आया तो लेट्स जस्ट कीप दैट. बट इट्स रियली गुड टू सी दैट यू इवन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद योर रूल्स एंड द डायरेक्टर्स आर आल्सो लाइक प्लेइंग विद यू इन डिफरेंट So on setup. that, Gonika, in fact, I would share one of the very interesting, yes, romantic roles I did in some dancing as well, which I was never very confident that I would be able to manage and pull it off, but I did. And this was the leads of a TV show, which was Mannat and Dr. Arambhi and some Ah. other shows as well. With all the leads, I had good, and of course, there was a choreographer, and we trained for it. But the new interesting thing which has started for me is comedy, because that's a genre that's picking up. And 100%. sorry, 100% yeah, true. And I've been enjoying that so much, and I've been getting good feedback on. People have, especially the ones who are close to me and who've seen me for so many years, they feel that yeah, this comedy is a genre that I should explore more because it's too good and that's the feedback I've been receiving. So all the directors out there, yeah, I'm open for comedy, and the roles I've been doing are very exciting. Yeah. I have not done one genre which is horror. I've been approached by a couple of directors for that, but that's still pending. But besides this, I've tried mostly everything. Super. I mean, we would love to see you in horror as well, but this time we would want you to get scared. So yeah. Also, there's a lot of buzz. एक photo है with Tiger Shroff that's going viral. People are commenting. बता दो. Please मत छुपाओ. Why are you hiding? हमें tease मत करो. What is it about? I know it's confidential, but a little about it. That what is happening and how. I mean, is your bond with Tiger? How is he? Is he like all the time doing his gymnastics on the sets, or like he's a very calm and composed, or he over कर रखा है ऐसा social media? So Tiger is a gem of a person. Yeah. Like he's a beautiful soul, is what I can say, and बहुत ही humble, बहुत ही sweet. I think individual है. Like father, like son. I feel like Jackie. Both, yes. He's a boss. And no, I feel sorry, don't take it into it, but I feel Tiger is even sweeter. Oh. He goes. He's so nice on the set. I cannot talk about the film because, of course, it's in post production right now. So you have to wait a few more weeks for that. But I had a beautiful experience working with him. All the action scenes, all the drama that we had.